Hi folks, welcome to the orientation of Geek Heaven. Geek Heaven is the technical society of Triple ITA. Myself, Garuj, overall coordinator of Geek Heaven, and I'm third year UG student of Triple ITA. Yeah, next. So what is Geek Heaven? Next slide, Varun. So Geek Heaven is a group of highly motivated individuals with excellent tech background. We build projects together, organize events and workshops. Yeah, next. So what we do, um, next, we host workshops on all major topics. We host events and competitions for students to build their foundations. Recently, we have organized open code and one global CC contest also, and we curate blogs also. We have our Medium handle. Does anyone know the name of our Medium handle? You can write in chat. And by the way, we have goodies for all quizzes that we have in between. Yep, right. Yeah, Nibbles is the right answer. Next slide. And as I mentioned before, we also build projects. Uh, uh, Projects comprises of all major tech domains that you can think of, like Django, blockchain, all tech domains. And we have also uh, like maintained our community server also. uh, कोई श्रेयस लिंक भेज देना एक बार चैट में डिस्कॉर्ड सर्वर का. And we also provide mentorship to the entire geek event like entire triple ITA community. It's like, so like you must be thinking what all technology do we cover. So we cover all technology that you can think of, like next slide. Next to next. Yeah, next. We have created projects on Django, React, blockchain, like Kotlin and all. You can check out our all projects. You can check out our all projects at Is my audio breaking? Okay. So, now we're on next slide. Yeah, so I'd like to give some words of advice to you all too. That is, first of all, never get demotivated. मीन्स ऐसे कभी मोमेंट्स आएंगे जब तुमको लगेगा कि कुछ प्रोग्रेस नहीं बन रही या फिर क्या फायदा इन सब प्रोजेक्ट्स को करने का, कुछ आगे बात नहीं बढ़ रही है. सो उस मोमेंट्स पे कभी डिमोटिवेट नहीं होना है. तुमको लगेगा कि सब लैपटॉप वगैरह फोड़ देना चाहिए, बट ऐसा कुछ होता नहीं है. तुमको बस मोटिवेटेड रहना है कि अपने काम पे आगे तुमको प्रोजेक्ट पे काम करना है. ये काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है जब तुम कोई सॉफ्टवेयर वगैरह पे मतलब कोई नई सॉफ्टवेयर सीखते हो, मतलब सॉफ्टवेयर के बारे में या फिर कोई नई स्किल सीखते हो, तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है. सेकंड, डोंट बी अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स और सॉल्विंग बग्स. मिस्टेक्स किए बिना कभी तुम सीख नहीं सकते हो. ये तो एक प्राइमरी सब लोग ये सब लोग इस बात को जानते ही हैं कि जब तुम किसी कोई नई चीज सीख रहे हो, कभी किसी प्रोजेक्ट पे काम करो, तो मिस्टेक्स तो होंगी ही होंगी. सो मिस्टेक्स करने से कभी डरना मत, और बग्स को भी सॉल्व करते रहना. जब भी कोई नई बग दिखे तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करना. जस्ट स्टार्ट समवेयर. तुमको कहीं से भी बस किसी तरीके से बस शुरू कर दो. कुछ भी अगर मिल जाए कहीं से. तुमको अगर वेब करने का मन कर रहा है, ऐप करने का मन कर रहा है, तुमको कॉम्पिटिटिव कोडिंग करने का मन कर रहा है, तुम वो कुछ भी तुम बस शुरू कर दो कहीं से भी. और लेकिन बट उसमें डोंट प्रोक्रेस्टिनेट. ज्यादा लेट मत करो ये डिसाइड करने में कि अब शुरू करते हैं या कुछ दिन बाद शुरू करेंगे. जस्ट स्टार्ट करना है तो तुरंत स्टार्ट कर दो इसको.
Yeah, next slide. So Geekhaven have 7 wings, 16 coordinators, and 38 members. So coordinators are basically third year students, and members are second year students. Next. So Geekhaven has 2 overall coordinators. First one is Vishesh Mittal. He majorly works on machine ML, sorry, ML deep learning projects, and I am Garvit Chittoda. I majorly work on web development and blockchain. Next. Yeah, I have mentioned this before. Geekhaven has 7 wings. First one is FOSS, Web App Design. Then we have AI, CC. Next slide. Computer programming, cyber, and AI. Next. Hi everyone, I'm Raghav Goyal and I'm a member of the FOSS wing. So first I'd like to tell you a bit about FOSS. So as you can read on the slide, FOSS is free and open source software. It refers to software that are basically built by developers on completely transparent platforms and where users with the right knowledge can contribute to the development of those softwares. In FOSS, our aim is to encourage open source development, make students learn about open source workflow, and make them aware about big paramount open source events like GSOC, Outreachy, etc. Next slide. We have 3 coordinators in FOSS, Varun sir, Pranav sir, and Shaurya sir. They're here with us. So hello everyone. I have gave my introduction earlier before. So I'm also the coordinator of the FOSS wing. I'm basically an Android developer, and I was also a student of the Google Summer of Code. So yes. Hi everyone, I'm Shaurya and I am one of the coordinators of FOSSWing, and I have been doing Flutter development throughout the time I've been in college, and yeah, I'm even interested in open source. So yeah, we'll be looking forward to participation from you guys. And Pranav is So not there in Meet. Yeah, Pranav majorly works on app development and web. yeah, so the members of the FOSS wing would continue with the workshops orientation. So yeah, guys, you can continue. Yeah, so next slide. We have different FOSS members as well, and the presenter, they'll introduce themselves. Hello everyone, I'm Shashish Mittal and I'm a web developer and I love to learn about the latest technologies like which are going around. Recently you might have read a blog on Metaverse about it and hoping to teach you all latest technologies soon. Hello everyone, my name is Pankaj Kumar. I'm also a FOSS-Wing member and I am primarily a web developer and within that specifically a Django developer. So, and I'm continuously learning more and more technologies. Hope to see you soon in APK month. So hello everyone, myself Abhay Singh, and I think you know me, some of you, but basically I'm a Java developer and a web enthusiast. But I am also a app developer. I in free time I like to do basically. Sorry. Hello everyone. So I'm Nidha Tiwari and I am basically a web developer and I also have interest in blockchain. So if you have any query, I mean, if you want to reach out to me, you can. My roll number is IEC 20063. So see you soon in workshops. Hi everyone, I already introduced myself before. I'm Raghav. I'm an open source enthusiast and I have interest in web development. See you at the workshop.
Hi guys, I'm Dia Wagmare. I'm a front-end developer and I'm also very enthusiastic about open source. Hello everyone, this is Supriya. I am learning blockchain development and Android development. See you at the workshop. Hello everyone, I'm Ekab Sinha. I've been doing app development and web development since the first semester, and I have also done some open source. So yeah, thank you. All right, so now that you know about FOSS and all the coordinators and the members, let's learn a few things about what we actually do in FOSS because it's not something that most of you must have heard before. So basically, why do we have a FOSS wing in our college? It is so that we can highlight the importance of collaborating with other people and not just in our college, but around the globe to develop software in an organized manner. So basically what open source does is there are big projects that you might actually be using in your daily life that are online that you can collaborate in and contribute code to. And why open source is so important is because it makes it very easy to track who's making what contribution and whether or not that feature has to be added in whatever application or whatever website that you're contributing to. So it makes it very easy to be aware of whose um, whose code has a bug in it. So all of this we'll tell you more about in our FOSS workshops. Again, one other thing that we do is we build open source projects and we encourage contributions. So you as first years will be allowed to contribute in our open source projects as well. So this will help build a really good culture of open source in our college. So we have projects for that and we'll let you know about that as well. And one other very important thing that we do is collaborate with other wings in Geek Haven because FOSS is like a culmination of all the other wings. In FOSS, you can do anything you want, be it AppD or WebD. So we collaborate with all the other wings to conduct a very important event of our college, which is Open Code. And it's basically a month-long event where you contribute in the open source projects of different wings. Basically, like you can contribute to AI or WebD or AppD. There are many projects that you can contribute to, and there's a lot that you get to learn. In fact, I got into FOSS through Open Code, so it was a very enriching experience for me, and there's a lot that I learned. So we're looking forward to you guys participating in Open Code as well, which won't happen right now, but it'll happen later. So this is all that we do in FOSS and much more because it's a really big wing because there's a lot that we do. So yeah, looking forward to your participation. So next slide. So you might be thinking like, yeah, we have heard a lot, but why is FOSS really important? So like FOSS is much more than just software. Without FOSS, a developer is like an art without an art exhibition. Because if you make an art and you don't have anywhere to present it, so who will see your art? FOSS Wing is open to all, like who is motivated to learn and eager to help. FOSS is like a superset to all other wings. It connects everyone and all different types of domains. Within FOSS culture, you can discover and work on any tech stack in existence. It is an unbounded space. So whatever, irrespective of whatever you learned in your college life, whether it be web dev, app dev, ML, AI, or whatsoever, you will be needing platforms to share your work, tools to increase your productivity so that people can know you and your skills. And that very tools and platforms will be introduced to you by us, including tools like GitHub, Linux, etc. Yes, the next slide. So there are some well-known open source softwares that most of us have utilized at some point of time, as you can clearly see on the slide, which are built with support of the big and collaborative free and open source community. This alone explains the significance of this space.
Okay, we can move on to the next slide. So we have a little quiz for you. There are logos of important softwares and companies. So you might have seen them before or you might not have. So if you know the answers, then you can start writing them in the chat. And the first person to get all 7 correct will get a goodie. These are things which are very integral to FOSS. So, Like सबका साथ में दो with numbering like 1, 2, 3. सबका साथ. yeah, do answer all 7 of them together. Manas got the first 4. You can try the next 3 as well. साथ में लिख के. अभी तक किसी ने सारे साथ में लिख के बताए नहीं. अच्छा चलो बता दिया. Okay, so we have our answer. We have the answer. So, Yeah. yeah, we can move on. Next slide. Yeah. So like these are the popular open source programs, and this is a like best point of the open source. Like the students got encouraged by participating in these programs, and like there is MLH where students collaborate with the mentors and organization and work with them and understand the like how to work in a like community environment and how to work with others like pair programming and etc. So like these open source programs are the best plus point for the students. Got this is the best way like you can learn something, and they also provide some stipend for like for your daily uses like daily expenditure, sorry, and like this is the best for like plus point of open source. Next slide. So Before we, FOSSwing, Pankaj, just 1 second. Before we move on to projects, I'd just like to emphasize the importance of these open source events. They're highly prestigious, and every year, about like hundreds of thousands of people try to apply for it and try to get selected. So if you are someone who's cracked GSOC, it's considered a really, it's like a shining medal on your CV basically, and it gives recruiters something to, hire you for. So basically, this is why we want to cultivate a good culture of open source in our college, because we want more and more people to crack such highly prestigious programs like GSOC and Outreachy. And Outreachy is especially for females. So, to have a bit of inclusion and to give females an opportunity to shine better, there's Outreachy, and of course we have Open Code, because we want to start you off in your own college, and then you can go on to try cracking GSOC or MLH. So all of these are highly prestigious, and I would like to say ki this is something that you should really think about. This is something that should be one of your goals that you want to achieve, and we are here to help you with all of this. So Abhay himself cracked GSOC in his first year, which is a huge thing, which is why we are telling you about all of these. So yeah, that's all. We can move on to the projects now. Pankaj, continue. Yeah, thank you. So here are some mainly 2 of the projects in which FOSSwing was involved. SemBreaker, which many of you already must have known about, is a very useful app regarding your academics. And if you haven't downloaded it, you can download it right now by going to the Google Play Store. Unfortunately, it's only available on Android for now, not for iOS. And next project is Ask Us. Ask Us is a currently ongoing project
It is basically a community forum for our college where anyone can ask any question and they can get the answer from our college community. It's like Stack Overflow, Quora, and many other community platforms which you may have seen. And it's under development right now. It will be an open source project, so even you can contribute to the development of Askus. You can contribute to the web-based front end. You can contribute to the Android front end, and you can also contribute to the backend, which is in Django. And more details will soon be shared regarding this. So keep an eye on it. That's it from FOSS, guys. Thank you so much. We look forward to seeing you in the workshops. Hey guys, I'm Aditya Verma. I guess, so yeah, I'll be taking I'm a member of Web Development Wing. So the main aim of the Web Development Wing is to create awareness about web development in a college. मतलब हमारे कॉलेज में जितना वेब डेवलपमेंट होता है वो बेसिक अच्छा वाला वेब डेवलपमेंट यहीं से होता है, इसी विंग से. तो थ्रू आउट द सेमेस्टर विंग के जितने मेंबर्स हैं वो अलग अलग वेबसाइट्स और कॉलेज के अलग अलग डिफरेंट फेस्ट की वेबसाइट्स, इन सबको हम लोग डेवलप करते हैं, इसमें चेंजेस करते हैं, इन्हांस करते हैं. और हमारे कॉलेज का जो टेक्निकल कल्चर है हम उसे इम्प्रूव करते हैं और बाकी जितने भी टेक्निकल विंग्स हैं उनके साथ भी कोलैबोरेट करके एक बेटर रीच के लिए हम लोग इंस्पायर करते हैं. नेक्स्ट स्लाइड. So these are our coordinators. क्या कर रहा है बे तू? देवांशु बता तो this. So Vishwas sir, Shreyas sir and Chetan Kark sir. I think if someone is here. No, they are not here. Okay, so Vishwas majorly works on the front end part of like web. Shreyas works on backend and blockchain, and Chetan works on backend part. okay, so these are the members. Priyal, Shailesh, Mudit. I guess Mudit is here. Mudit? Hello. Am I audible? Yeah, you are. So hey guys, I am Mudit Agarwal. I am a web developer and open source enthusiast. So I'll be expecting you in the workshop. Thank you. Yeah, ये वर्कशॉप लेंगे फ्रंट एंड वाली. और मैं तो आदित्य वर्मा, मैं मोस्टली बैक एंड डेवलपमेंट करता हूँ और साइबर सिक्योरिटी भी अच्छी लगती है मुझे, तो थोड़ा बहुत वो भी देख लेता हूँ. और अक्षय और सार्थक हैं. हेलो गाइस, आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ आ रही है. Hello guys, I'm Akshaj. I'm a full stack developer. Means I do both front end and back end. And recently I've been also working on blockchain. So let's meet you at the workshop. Thank you. Hello everyone, I'm Sarthak and I'm also a full stack web developer. Am I audible? Hello. हाँ आ रही है. So as I said, I'm Sarthak and majorly I specialize in backend, mostly Node.js, and hope to see you in the workshop soon. चलो ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड. सो व्हाट मेक्स अस स्पेशल, मतलब हम लोग ऐसा क्या अलग कर रहे हैं बाकी लोगों से. तो मतलब कोडिंग कल्चर तो वेब डेवलपमेंट में कॉलेज का जितना भी है वो हमारे थ्रू ही है. मतलब बाकी विंग्स के भी लोग भी वेब डेवलपमेंट करते हैं, लेकिन जो कोर वेब डेवलपमेंट है जो अच्छे से करते हैं वो हम लोग करते हैं. सो हम लोग वर्कशॉप्स कंडक्ट कराएंगे अभी एपी के मंथ में, उसका ही बताते हैं. और ब्लॉग्स हम लोग लिख रहे होते हैं, तो वो तुम लोग निबल्स पे जाके चेक कर सकते हो, काफ़ी सारे वेब डेवलपमेंट के ब्लॉग्स हैं. और हम लोग का एक अलग कम्युनिटी सर्वर है गिटहब, वो सॉरी डिस्कॉर्ड पे, तो वहाँ पे भी हम लोग डिस्कशन करते हैं और काफ़ी मतलब वेब डेवलपमेंट की एक अच्छी कम्युनिटी है वहाँ पे भी.
और एपीके मंथ का जितना भी लार्जेस्ट पोर्शन है मतलब वो हम ही पढ़ाते हैं, मतलब 10 days हम लोग पढ़ाएंगे तुम लोग को। तो उसमें खूब सारी टेक्नोलॉजीज और फ्रंट एंड बैक एंड सब पढ़ाएंगे तुम लोग को। और वेब तो मतलब वाइडेस्ट डोमेन है, WWW इट्स मतलब वर्ल्ड वाइड वेब। तो उसमें खूब सारी टेक्नोलॉजीज होती हैं, खूब सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, जिन पे खूब सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो हम लोग काम करते हैं जिन पे। जैसे गीक हेवन की वेबसाइट है, वो तुम लोगों ने चेकआउट कर ली होगी अभी तक, नहीं तो उसका लिंक कोई डाल देना अभी। और कैल ट्रिपल IT है, वो भी अगर तुमने देखा होगा तो उसका बैकएंड भी वेब डेवलपमेंट टीम ने ही डेवलप किया था। और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, अभी दिखाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। सो क्यों करनी है वेब डेवलपमेंट? मतलब पहली बात तो हर जगह है वेब डेवलपमेंट, मतलब कोई भी वेबसाइट है, मतलब अब तो ऐप्स में भी जैसे बैकएंड का पार्ट है वो वेब डेवलपमेंट के थ्रू ही बन जाता है, APIs डेवलप करने हैं तो कहीं मतलब हर जगह ही है। और तुम लोग की क्रिएटिविटी बूस्ट होती है इससे, मतलब तुम जो बना रहे हो वो तुम्हारे सामने दिख रहा है, तुम कोई वेबसाइट डेवलप कर रहे हो वो तुम्हारा ही क्रिएटिव माइंड से बन रही है। और इट्स द ईजिएस्ट वे टू गेट समथिंग अप एंड रनिंग। और काफ़ी सारा मटेरियल है, काफ़ी सारे टेक्नोलॉजीज़ हैं, फ्रेमवर्क्स हैं, काफ़ी मतलब काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं इसमें। तो उस पर मतलब खूब काम कर सकते हैं। और जॉब्स में भी बहुत इसका यूसेज है, मोस्ट ऑफ द जॉब्स इन्वॉल्व यूज़ ऑफ वेब डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज। तो वो तो अभी जॉब जब करोगे तब पता चलेगा, लेकिन तब भी अभी से करना शुरू कर दो। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, गीक हेवन की वेबसाइट है जैसे, वो चेक करना बहुत अच्छी है, वो बनाई है हम लोगों ने। कैल ट्रिपल ITA का बैकएंड जैसे मैंने कहा वो हम लोगों ने बनाया है। और नेक्स्ट स्लाइड। और ये दो प्रोजेक्ट्स में ये ओपन कोड में वेब डेवलपमेंट टीम ने ऑर्गेनाइज कराए थे। इसमें एक है गीक चैट और एक है गीक एडिटर। तो मतलब जैसे कोड एडिटर होता है वैसे हम लोगों ने वेबसाइट बनाई थी कोड एडिटर की, वो फुल्ली फंक्शनिंग था। और एक जैसे तुम लोग का डिस्कॉर्ड होता है वैसे ही हम लोगों ने पूरी एक वेबसाइट बनाई थी डिस्कॉर्ड टाइप, तो उसका नाम था गीक चैट। तो ये सब डेमो है, तुम लोग को चेकआउट करने तो गिटहब पे चेक कर सकते हो, ओपन कोड की रेपो पे है। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्लाइड। या क्विज मुदित तुम। Yeah, so it's quiz time, and you are basically means you have to guess which are these three symbols. Or एक साथ लिखना तीनों, मतलब ये नहीं कि एक हाँ, एक yes, पे। सब एक साथ लिखना, इनके नेम्स लिखने तुम्हें। थोड़ा टफ है, देखना पड़ेगा तुम लोग को, गूगल लेंस मत यूज करना। लगता सही आ गया लोगों का, लेकिन अभी भी पूरा सही नहीं है। आ गया आंसर। हाँ, ये आंसर आ गया, ठीक है, मानस गुप्ता। हाँ, तो ये ग्राफ QL पोस्टमैन ओव्यू, ये तीन। नेक्स्ट स्लाइड। ओके। अब ये एक मतलब ओल्ड वेबसाइट है, कोई मतलब पुरानी वेबसाइट है, अभी तो अपडेट हो गई है। तो ये बताओ ये कौन सी वेबसाइट हो सकती है पुरानी, मतलब ये इसका पुरानी वेबसाइट का स्क्रीनशॉट है। गेस करने के कौन सी वेबसाइट है। कौन सी वेबसाइट है? अरे बड़ी जल्दी। गूगल कहीं लिखा था लिखा है किसी क्या? ने शायद। कहीं लिखा तो नहीं, चलो ठीक है। ऐसे ही अगली भी होगी। नेक्स्ट। सेम ये है, इसका बताओ। हाँ भाई, ठीक है, लिंक्डइन भाई, ठीक है। हाँ आ गया, स्टैक आ गया ओवरफ्लो है आंसर। ये। स्टैक ओवरफ्लो, ओके, नाइस। अब्बर आंसर भाई किसने किया? लिखता रहना, ठीक है ना? हाँ सर, हाँ देख। हाँ सर। ये बताओ। तो बताओ। आ गया भाई, आंसर आ गया। ये याहू है, थोड़ा नीचे वैसे दिख भी रहा है याहू लिखा है। नीचे दिख भी रहा है अगर किसी ने वो ध्यान दिया होगा ब्लैक आउट करना रह गया, चलो कोई तो। नहीं। चलो नेक्स्ट हो गया हम लोगों का। और हाँ, जय वेब। यस, हाँ, जय वेबडी। लिख दो भाई, स्पैम कर दो जय वेब। हाँ बस, स्पैम कर दो यार। ये मतलब एंथम है हम लोग का वेब डेवलपमेंट वाला का।
चलो नेक्स्ट स्लाइड. Am I audible? Hello. Yeah, you are audible. Yes, sir. Okay. Do you use social media apps, YouTube or Google Pay? Well, the answer for most of you should be yes. Well, the one thing common about them is they all are made up from application technologies. Hello everyone, I am Anubhav Kumar Rao, second year undergrad, AppD Wing member, and I am a native Android developer, full stack web developer, and competitive coder. Okay, first of all, meet our team. Next slide, please. Okay, Tejas sir and Varun sir. They are the fire behind the AppD Wing. Any of them? So, hello juniors, myself Tejas Agrawal, and I am app developer and wing coordinator in Geek Heaven, and I have been in Geek Heaven since 2020 when I was a member, like Anubhav and all, like your other seniors. So I am a Flutter developer. Like I started learning Flutter in my first year, and I got into Geek Heaven in second year. And I also love not only Flutter. There are many things that I love to work on, like data science and all. So I would recommend, like, if any of you has any interest regarding the cool apps which you see all around your in your today's world, like Zomato, Uber, or anything else. So you should definitely give a try to learn the technology behind all of these things. So that's all about me. So juniors, please continue. Next slide. Aditya, these are our members. So members will introduce themselves. Aditya. Hello everyone, I'm Aditya Narayan. I'm front-end native app developer. I'm a member in AppD Wing as well, and hope to see you great enthusiasm from your side as well in the upcoming workshops we are going to hold. There would be APK month just by the end of this month. Hope to see you there. Kavita. Hello everyone. Am I audible? Yes, you are audible. Hello everyone. Myself Kavita, and I am a native app developer. My roll number is IIT 2020002. So hope you guys. I'll see you in the workshop. Next slide. Lalit. Hello everyone, I'm Lalit. I'm second year student and I'm Flutter developer in Geek Heaven. Hope to see you soon, interact with you soon. Gautam. Hello, I'm Gautam Mishra. I'm second year in Hyderabad. I'm a Flutter developer and I love to play games. Hope to see you all in Aproksha month. Samarth. Hello everyone, I'm Samarth Goyal and I'm also a Flutter developer and I play games with Gautam and tech stuff with Lalit, so I kind of do both and hope to see you in the workshop. Next slide. ओके सो तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना वो ये है कि वाई एफडी. सो पहला जो रीजन है वो बहुत ज्यादा ऑब्वियस है. लाइक ग्लोबल यूजर्स ऑफ स्मार्टफोन्स जो अभी करंट है 2022 में वो 6.65 बिलियन है. लाइक ये बहुत बड़ा नंबर होता है. एंड लाइक जो 90% ऑफ द पीपल है जो लोग है वो अपना टाइम स्पेंड करते हैं वो एप्स पे करते हैं, मोबाइल एप्स पे, एंड ओनली 10% स्पेंड सर्फिंग द वेब. ओके सो जैसे जैसे हम प्रोग्रेस कर रहे हैं फ्यूचर जनरेशन में वैसे वैसे जो टेक्नोलॉजीज हो रही है मोबाइल फर्स्ट हो रही है. एंड द ग्रेट एंड और मोबाइल डेवलपमेंट का बहुत ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर है. मतलब बहुत ज़्यादा लर्निंग अपॉर्चुनिटी है उसमें. लाइक जैसे मोबाइल डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं आपको उसी समय डिज़ाइन पैटर्न्स का, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर्स का, उसका नॉलेज आपको मिलना तुरंत स्टार्ट हो जाता है. और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करियर में. लाइक अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में एज अ एसडी ही वर्क करेंगे तो फिर वहाँ पे आपको कोई एक फीचर दे देंगे. लाइक यू हैव टू डू सम फीचर डेवलपमेंट
या फिर आपको कुछ भी मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम देंगे जहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और ये डिजाइन पैटर्न्स की बहुत ज्यादा नॉलेज रिक्वायर पड़ेगी। तो फिर एफडी में आप शुरू से ये सब चीजें सीखेंगे। सेकेंडली, लाइक जब आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखते हैं तो उसमें आप बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम जो एंड्रॉयड का होता है वो भी काफी सीखते हैं और लिनक्स कर्नल के बारे में भी आपको काफी अच्छा आइडिया लगता है। एंड यस, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि लाइक जो एंड्रॉयड डेवलपमेंट है उसमें हम जो मेन टेक्नोलॉजी यूज करते हैं वो होती है जावा और कॉटलिन। लाइक अगर आप जावा यूज करते हैं तो उससे आपका काफी स्कोप मिलता है आपको। लाइक आप उसमें जीसॉक कर सकते हैं और ओपन सोर्स के काफी सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं जावा में। एंड लाइक जावा का एक स्प्रिंग फ्रेमवर्क भी होता है जिससे आप वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं। एंड पूरी इंडस्ट्री में वन ऑफ द सबसे मोस्ट डिमांडिंग लैंग्वेज है जावा। चाहे लोग कुछ भी बोले, बट जावा इज स्टिल द मोस्ट डिमांडिंग लैंग्वेज इन इंडस्ट्री, क्योंकि इतना कोड, इतने करोड़ों लाइंस का कोड लिखा हुआ है इसमें। तो मतलब अगर इसका आइडिया होगा तुम्हें तो फिर टोटल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट काफी इजी लगेगा, काफी अच्छी फील आएगी उसकी। सेकेंडली, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो कॉटलिन लैंग्वेज है जो अभी हम मेनली यूज करते हैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए, ये काफी ज्यादा सेफ है। लाइक अगर तुम इसको लर्न करोगे तुम्हें पता चलेगा लाइक ये वन ऑफ द मोस्ट, क्या कहते हैं उसको, एडवांस लैंग्वेजेस है। तो मतलब इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो पुरानी लैंग्वेजों में नहीं थे। तो मतलब ये तुम्हें एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर तुम ये सीखोगे तो काफी ज्यादा फायदा होगा। प्लस थर्ड सेमेस्टर में तुम्हें ना जावा का कोर्स भी होगा, ऊप्स ऐसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। तो फिर अगर तुम एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखते हो तो काफी ज्यादा मतलब हेल्प मिलेगी तुम्हें। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो तुम ये ट्रेंड देख सकते हो लाइक 2016 से 2026 जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लाइक क्या यूजर बेस होगा स्मार्टफोन्स का। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि लाइक जो फ्यूचर जनरेशन है वो मोबाइल फर्स्ट होने वाली है। तो बस ये याद रखना कि लाइक मोबाइल डेवलपमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग स्किल दैट यू शुड हैव। थैंक यू। नेक्स्ट स्लाइड। Now Kavita will Okay. introduce you about. Okay. Hello, everyone, once again. So, am I audible now? Yeah. So, I'll be telling you about the popular tech stacks in Android that we use in our college. So, तुम्हें पता ही होगा कि Android and iOS are starkly different from one another. So, that's why they have their own style of technology stacks. Now, for Android apps, we use Java and Kotlin. So starting with Java, as तुमने as अभी अनुभव बताया Java के बारे में कि बहुत लोग को Java के बारे में पता ही होगा. So yeah, Java is considered to be the most popular language for making Android app, as they are based on Android APIs and have a huge variety of built-in Java libraries. And the major apps made in Java are Spotify, Twitter, Opera Mini, and many more. Now moving on to Kotlin. So yeah, Java used to dominate the Android app development area, but not anymore, as Google announced that Kotlin will be the official language for Android development. So yeah, अब Kotlin का ही राज है. Now next is Flutter. Flutter is a Google powered tool for cross platform development, and it's basically based on the Dart programming language. So अभी don't get confused or demotivated because ये सब बाद में बताया जाएगा तुम लोग को. सो या इसमें iOS एंड एंड्रॉयड दोनों का सिंगल कोड बेस होता है, तो इट इज एक इसमें प्लस पॉइंट है. एंड या गूगल पे वाज रीबिल्ड इन फ्लटर एंड गूगल एड्स और रिफ्लेक्टली. सो या दिस वाज ऑल अबाउट द पॉपुलर टेक स्टैक्स वी यूज्ड इन आवर कॉलेज. सो थैंक यू गाइस. नेक्स्ट स्लाइड. Okay, so I'll tell you about the projects we are currently working on in our AppD wing. तो जैसे कि सैम ब्रेकर के बारे में फॉस्विंग वालों ने बताया था कि ये हमारा एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है एंड ये पूरा फ्लटर में बना है. लाइक इसका हमने फ्रंट एंड फ्लटर पे है और जो बैक एंड है वो फायरबेस पे है, और ये तुम लोग यूज़ भी करोगे, काफ़ी यूज़फुल ऐप है और इसका UI वगैरह भी तुमने देखा होगा.
लाइक स्मूथ चलता है। तो ये पूरा हमने फ्लटर पे बनाया है। जो तुम्हारे इस टाइम सीनियर्स हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं फॉसविंग के, उन्होंने बनाया था इसे। तो बहुत सही ऐप है। लाइक तुम्हारे पास भी कोई आइडिया होगा और तुम्हारे पास भी इस पे कंट्रीब्यूट कर सकते हो, तो काफ़ी मज़ा आता है कंट्रीब्यूट करने में भी और सीखने में भी। तो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। एंड ये दूसरा ऐप है कैल ट्रिपल आई टी है, इसके बारे में आदित्य बताएगा। सो कैल ट्रिपल आई टी ये अभी एप्टीविंग ने नहीं बनाया है, तो इसका फ्रंट एंड एप्टीविंग का है, बैक एंड वेबडी का है। और इसका सबसे कूल बात यह है कि इसका नॉर्मल मोड ही डार्क मोड है, बहुत कूल लगता है देखने में। और इसका मेन एम ये है, जैसे अपने कॉलेज में काफ़ी कुछ इवेंट्स होते रहते हैं एक के बाद एक, तो उसमें अगर तुम मिक्स हो जाओ कि कौन सा इवेंट कब है स्केड्यूल, तो इसमें सारे रिकॉर्डर रहेंगे कि तुम उसके लिए टाइमर लगा सकते हो, इंटरेस्टेड हो कि नहीं हो, जाना है कि नहीं जाना है, वो सब लगा सकते हो। सो दैट ये तुम्हें इन्फॉर्म कर देगा कि नहीं देयर इज एन अपकमिंग इवेंट यू कैन गो फॉर। सो दिस इज अ वेरी यूजफुल ऐप, एटलीस्ट इन ऑफलाइन मोड दिस इज क्वाइट ए यूजफुल ऐप। ऑनलाइन में भी काफ़ी यूजफुल है, क्योंकि कोई भी इवेंट वाले तुम्हें नोटिफिकेशन भेज सकते हैं कि अभी एक अपकमिंग इवेंट है, कम फॉर इट। So you could like go for and see it on the Play Store and download it as well. कुछ और हमारे प्रोजेक्ट्स हैं अभी ओपन कोड में। हमारे दो प्रोजेक्ट्स ऐप के, एक कोलैबोरेटिव ऐप और एक न्यूमिस्मेटिक्स, उन्हें भी जाकर चेकआउट कर सकते हो। Now let's start with the quiz for today. Next slide. हमने ये क्विज ऐसे बनाए कि आपको ज़्यादा एप्ली के बारे में पता नहीं हो, तो हम जस्ट आपको ब्रीफली ऐसे जनरल नॉलेज क्विज पूछेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि how many apps are available for Android and how many apps are available for iOS? आंसर नियरेस्ट मिलियन के हिसाब से देना। तो fastest finger first guys, let's see. दोनों के एंड्रॉयड 4 मिलियन, iOS 2 मिलियन। तो अहमद राफी ने काफ़ी क्लोज आंसर दिया है। सो एक्चुअल है एंड्रॉयड के 3.5 मिलियन है एंड iOS के 2 मिलियन है। सो काफ़ी अच्छा आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जावा और कोटलिन किस चीज़ पे नेम किए गए, किससे नेम किया गया उनको? काफ़ी जल्दी आंसर्स आ गए सारे। आइलैंड सही है। नेक्स्ट। Now, approximately how many apps are downloaded every single day across all the platforms, Play Store and App Store both? ये nearest thousands में देने हैं। 100 में 500 की पर डे पूछ रहा हूँ, पर डे नॉट पर मंथ, पर डे। ऐसे तो सबके आंसर बहुत दूर दूर हैं। ऐसे बीच में 5 के एक आंसर मिले, 4 के आंसर करेक्ट है। 4K 4000 is the correct answer. Next slide, and now Lalit will continue with the fun facts for the day. Okay, Hello. Tejas Yes, is Tejas also sir. gonna ask something. Yeah, so like you have seen the slides, Junior. So can anyone tell me, is Java or Kotlin or anything they mentioned is also used to develop iOS or other mobile applications, or they are only Android or that based? You can just say no or yes according to you. And if it is yes, just tell me for which language is used to develop for iOS. Kotlin for both, Kotlin for Android, Flutter for iOS, Flutter for both. Kotlin can be both. Okay, so who is this Ruby? Swift for iOS. Yeah, we got the correct answer. Swift for iOS. And who is this Ruby for iOS? Objective-C for iOS is also correct. And Flutter is for both, like Android and iOS. So that was correct, guys. You guys have pretty good knowledge about this. So that is a great thing, I guess, for first years.
Hello, hello everyone. Are you audible, Lalit? So you can see Android and iOS app revenue reached 111 billion revenue in 2020. तो देख लो पैसा ही पैसा है, बहुत स्कोप है FD में. Next slide. Or the average smartphone user spends 90% of time in apps with just 10% surfing on web. ये तो तुम देख ही सकते हो आजकल, तुम्हें मोबाइल ये तो ऑब्जर्व कर सकते हो अपनी डेली लाइफ में ऑब्वियसली कि ज़्यादातर मोबाइल यूज़ करते हुए दिखते हैं लोग और फ़ोन ऐप्स वगैरह यूज़ करते हुए दिख सकते हैं. सो दैट्स ऑल फ्रॉम FD विंग. बिफोर फिनिशिंग ऑफ फ्रॉम एफडी विंग, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तो हमारे वर्कशॉप में जरूर आना. हम तुम्हें हाउ टू कॉल एपीआईज और डेटाबेस से वर्क करना सिखाएंगे और काफी अच्छा आइडिया देंगे एंड्रॉयड डेवलपमेंट का और फ्लटर डेवलपमेंट का. थैंक यू. अरे एक स्लाइड रह गई. एक साइड शायद. तो ये देख लो, मतलब जावास्क्रिप्ट के तो JavaFD फिर से चल जाना चाहिए. और हाँ, JavaFD का क्रेडिट गर्वित सर को, मतलब उन्होंने ही स्टार्ट किया था. नेक्स्ट. हेलो, आवाज आ रही है? हाँ आ रहा है. Hello. Hello, freshers. So I am Tushar, coordinator of the design wing. So let us start with a brief introduction about the design wing. So nowadays, design has become an integral part of the products that we consume in our day-to-day life. It is all about bridging the gap between the technology and the user. You know, sometimes direct interaction between the technology can sometimes be very complex, and we as designers try to simplify and make the process more interesting by creating a user-friendly interface for the user. The key point about good design is that it should be very intuitive and minimal. So now let us talk about the role of design wing in Geek Heaven. Design wing does not have independent projects like other wings. Mainly our projects are done in collaboration with the AppD and WebD wings. They basically develop a product and we have to design an user interface for the product. And also the social media handles of Geek Heaven is handled by the design wing members. Basically, this is pretty much it from my side. Now Mitisha will carry on. Hello everyone, I am Mitisha, the design wing coordinator. So basically, design अगर तुम लोग थोड़े से भी creative हो, if you want to try something creative other than coding, then you should go for design. You should at least try it once. I was also the designer for the Caltriple ITA app. That's it from my side. Members, please continue. Yeah, next slide, please. Yeah, so hi guys, this is Karthik Gupta. I am member of the design wing and a UI UX designer. What that means is I do not design t-shirts and posters or brochures. That is done by the more skilled and creative members of the wing. What I do design is I design the websites, the apps, their user interfaces, and the overall user experience. Hello everyone, my name is Manav Agrawal and I have written general designer, so I have done both graphics as well as UI UX. So I do both, and also I have knowledge about the front end development. Shreya is also a member of design wing, but she is not present with us today. So next slide please. We have Shruti as a member of design wing. She is a graphic enthusiast. She does mostly the graphic designing part. Next, Jayesh will continue.
Jayesh, your voice is not audible. So I think Jayesh is having some issues. So Jayesh is a motion and graphics designer at the Design Wing. He does mostly all the motion editing and graphics work. Can we have the next slide, please? Yeah, okay. So now we'll look at our projects. So जैसा कि WebD और AppD वालों ने बताया कि they have made the Geek Heaven website या फिर Call Triple IT बनाया या SemBreaker बनाया या Silverbook बनाया, तो ये सब डेवलप करने से पहले इनका डिज़ाइन सबसे पहले करना होता है, क्योंकि बिना डिज़ाइन के मतलब जैसे कोड तो लोग कर लेते हैं, बट बिना डिज़ाइन के यूज़र को जो एक्सपीरियंस होगा ऐप इस्तेमाल करते हुए वो कन्फ्यूजिंग हो सकता है. जैसे कोई आइडिया है, जैसे भी कैंपस स्टोर का आइडिया चल रहा है जिसमें कैंपस स्टोर एक वेबसाइट बनेगी जिसमें कॉलेज की सारी मर्च एक ही जगह सेल होगी, बट लेकिन यूजर को उस वेबसाइट पे आके सबसे पहले कहाँ क्लिक करना है, हम क्या चाहते हैं कि चेकआउट पेज कैसा दिखे, या फिर सेम ब्रेकर ऐप है उसके अंदर तुम्हें अपनी सेम की सारी रिसोर्सेज मिलेंगी, तो यूजर जब उस ऐप को पहली बार खोलेगा तो सबसे पहले उसको क्या दिखे, उसके बाद उसको क्या दिखे, यानी वो जो पर्पस उस ऐप में सॉल्व करने आया उसका जल्दी से जल्दी मिनिमम नंबर ऑफ क्लिक्स में सॉल्व हो जाए. तो ये सब डिजाइनर्स डिसाइड करते हैं कि ऐप दिखेगा कैसा, ऐप का यूजर फ्लो कैसा होगा, लोग कैसे कैसे ऐप के थ्रू प्रोसीड करेंगे, उसका जो एक्सपीरियंस है ऐप का वो कंफ्यूजिंग ना हो बिल्कुल भी. तो ये हमारे यूआई यूएक्स प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें हम गीक हेवन में काम करते हैं. Next slide, please. So these are some of the graphic designing part which are done by the members of Design Wing. So this is the first poster which in the chat you can write what is PMC if you guys know. If you have read the handbook that was given during the Facebook during the orientation session. Yeah, so PMC is the Pia Milan Chowraha. It is it is famous while in the offline, but unfortunately we are in the online mode. Also, these are the merch that we designed. That recently we launched the effervescence merch that you guys bought. That was designed by the members of Design Wing, and that is all. Next slide. ओके सो नाउ वी विल हैव, जैसा कि मैंने कहा कि डिज़ाइन क्यों इम्पोर्टेंट है, तो हम कुछ इंटरफेसेस देखेंगे जिनका कोड ऑलमोस्ट सिमिलर ही होगा करने में, बट उनमें सारा डिफरेंस जो आएगा यूज़र के एक्सपीरियंस में वो डिज़ाइन की वजह से आएगा. तो कौन सा इंटरफेस तुमको ज़्यादा सही लग रहा है, लेफ्ट वाला कि राइट वाला, और क्यों? चैट में लिख दो, अगर क्यों भी लिख सकते हो तो, वरना क्यों हम अभी डिस्कस करते हैं. किसी के पास कोई आंसर है क्यों राइट वाला अच्छा है? हाँ अच्छा, तो ऑब्वियसली दिख ही रहा है, मतलब दैट इज वन थिंग. ओके सो हाँ कुछ कुछ सही आंसर्स आए हैं. तो ऑब्वियसली लेफ्ट और राइट वाले का कोड ऑलमोस्ट सिमिलर होगा, बट यूजर एक्सपीरियंस, यूजर को इस्तेमाल करने में कितनी आसानी होगी वो सेकंड वाले में ज़्यादा आसान है, क्योंकि फर्स्ट वाले में जैसा कि हमने अभी डिस्कस करा कि पता नहीं चल रहा सबसे पहले कहाँ क्लिक करना है या मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्शन कौन सा है. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्शन लॉग इन है, उसके बाद साइन अप है. फॉरगेट पासवर्ड सबसे टर्शरी ऑप्शन है, तो इसलिए उसको सबसे कम इंपॉर्टेंस दी गई है हायरार्की में. नेक्स्ट स्लाइड. तो कौन सा इंटरफेस बेटर लग रहा है और क्यों? रीजन भी लिख दो चैट में और कुछ. हाँ तो कुछ कुछ सही आंसर्स आए हैं कि फिर से वही बात कि यूजर एक्सपीरियंस कैसा होगा इस ऐप को इस्तेमाल करने में, यानी कोड में तो ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर ही होंगे, बट लेफ्ट वाले को पढ़ने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, आइकॉन्स भी नीचे वाले ढंग से विजिबल नहीं है. तो ये सब डिजाइनर्स को डिसाइड करना होता है कि यूजर को अच्छे से दिखाई दे ऐप में सब कुछ, सब चीज़ों की रीडेबिलिटी अच्छी हो, सब चीज़ों का कॉन्ट्रास्ट अच्छा हो. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. या सो इसका भी आंसर बता दो फटाफट. हाँ इसका भी राइट वाला ही आंसर है. तो इसके अंदर मेनली ये वाली स्क्रीन यूजर एक्सपीरियंस की वजह से डिस्टिंग्विश्ड है, कि हम लेफ्ट वाली स्क्रीन में यूजर को बता रहे हैं कि कुछ एरर है, बट यूजर को क्या पता एकदम से कि क्या एरर है. तो हमारी एज डिजाइनर्स हमारी ड्यूटी है कि हम यूजर को बताएं कि ऐप के थ्रू कैसे create करना है, क्या दिक्कत आई है उसको ऐप में. तो राइट वाली ज़्यादा अच्छी है, वो ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ओके सो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका भी बता दो जल्दी से. हाँ इस बार लेफ्ट वाली स्क्रीन ज़्यादा अच्छी है, क्यों? क्योंकि पे करना मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है ना, लाइक तुम्हारे पैसे जा रहे थे, तुम काफ़ी सोच समझ के डिसीजन लोगे, उसमें राइट वाली स्क्रीन में दिखाई नहीं दे रहा है कि, तो यूज़र थोड़ा सा घबराएगा पे क्लिक करते हुए, कुछ पक्का पता नहीं है कि मतलब कितने पैसे कट जाएंगे. तो इसलिए लेफ्ट वाली स्क्रीन बेटर है. तो ये हमारी डिज़ाइनर्स की जॉब है कि हम मैक्सिमम यूज़र को इन्फॉर्मेशन दे सकें और हम उसका
फ्लो थ्रू दी ऐप आसान कर सके। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो ये देख सकते हो कि डिजाइनिंग में बहुत टाइम लगता है, मतलब ऐसे नहीं है कि एक बटन दबाए और डिजाइन पूरा हो जाता है, डिजाइनिंग भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो अभी डिजाइन के बारे में तुमको जो भी इन्स एंड आउट्स हैं वो हम वर्कशॉप में दिखाएंगे। थैंक यू। हेलो, ऑडिबल हूँ मैं? तो तुम लोग बोर हो गए या नहीं जूनियर्स? अगर बोर हो गए तो ये टाइम है बोर्डम से बाहर आने का। Here comes the most important wing of the Geek Heaven. Yeah, the complete coding wing. So today we'll show a glimpse of a few things like what is CP, what we do, and why should you do this, and some other things. So without any further delay, let's start. So the first thing that comes to our mind is what is computer programming? So the computer programming is about solving some well-defined problems by writing computer programs and under some limits. So simple words में बोल सकते हो कि you will be given a program, you will be given a problem, and with all the required assumptions, and now you need to write a program which will solve the problem in the given time. In CP, there is a time factor, which you will learn when you start. You can say the CP is about solving problems, a lot of problems. And you can also think like it's a kind of mind sport, and it's really, really fun. If you're thinking about how CP is different from normal programming, then you can think like in the normal coding, you don't have much of resource constraints, like how much RAM program will take. You don't think much about that. How much time it will take, you don't think much about that. But in CP, firstly, you think about the constraints itself, like whether your solution it will pass in the given time or not. Do you have enough RAM or not? The next thing which makes computer programming different is the coding competition. So in CP, you can see now there are two terms, competitive. So the competitive part that comes from the competitions. So there will be a lot of competitions, and that too of different types. Some short contests, some long contests. You will get to know more about that. Yeah, someone has written like CP is JE. Yeah, जैसे तुम्हारा नॉर्मल 12 था और फिर जेई था, तो वैसे नॉर्मल प्रोग्रामिंग है और फिर तुम्हारा उसके बाद जेई है। जेई तुम समझ सकते हो ये सीपी है। And next thing that in those competitions you get to showcase your talent, track the leaderboard, compete with friends, all these things, and they will really excite you a lot. And also while doing CP, what happens that you try to come up with an approach, and that should be the fastest approach, or some algorithm which is near to the fastest approach possible. And but in general programming, you don't need that thing quite often. You just solve the problem, that is enough. In CP, you will obviously learn to code faster, code the fastest approach possible. Now let's meet our team. Next slide, please. So we have 2 coordinators and 7 team members. Myself, Prince. Sumit, he couldn't join us today. Next slide. Team members. Hi everyone, I am Raghav Agarwal. I like to solve problems in contest. I also do a little WebP on side. Hello everyone, my name is Shan Saxena and I'm a second year UG student at IIITA, and I mainly do coding in C++. Hey everyone, this is Harshit Ranjan from CC Wing. I like to do questions on code forces mostly, and I'm an expert on code forces. So hello, I am Manj from second year, CC Wing member और coding enthusiast. अब कुछ तो लिखना ही था यार. Hello everyone, I am Aditya Vishwakarma and I code in C and C++. Hello everyone, I'm Sachin Raghuvanshi. I love coding, and I'm sure many of you will love in the coming days. Eagerly waiting to interact with you all.
So next slide. So I'm Mansh again. So what we do in CC Wing, like solve problem like everyone does. CC Wing organizes various contests, college as well as global contests like Code Guerra, Code Senso. Code Senso was recently held on CodeChef, which was rated for both Division 2 and Division 3. And as the meme says, programming hits hard. Aditya will continue now. Yeah, hello everyone. Basically, our main motive is to promote CP culture in our college. We conduct workshops and classes for this. Also, some seniors from here will take CP classes for you guys. जहाँ सब कुछ मतलब बेसिक से सिखा रहा होगा. It will cover almost all important topics from beginner to advanced level, which will be very beneficial for you guys in your CP journey. Also, we will be conducting a few post-contest discussion after every contest organized by us. Lastly, you guys can freely contact us for any CP related doubts. And now, Guys, next slide. Next. These were the first year These were the contests. major contests we organized. This was the Code Senso, and it was on CodeChef, and then Code Quera, and then Code Investor, which was also on CodeChef. Next. So why CP? So CP is mainly improves your problem solving skills, as it is a mind sport. Means it helps you tackle tough problems and how to solve them in a limited time constraint and memory constraints. CP also helps in cracking coding interviews, like the coding, like every big company has a coding round which for its interviews, and the questions are mostly similar to the CP. So if you have done CP, then the question is like your piece of cake. So it helps there also. And coding contests coding contests, it also will help in your course curriculum like DSA and DSA and DA and ITP subjects are also based on CP only. So they will help you in conquering those subjects. Now I will be talking about online judges. These are basically websites on which you will be doing competitive coding. Here are the names of few like Codeforces, CodeChef, HackerEarth, and AdCoder. For beginners, HackerEarth is considered much better. You got to practice a lot of questions here. Once you develop some confidence, then Codeforces, CodeChef, and AdCoder are quite good for them. Codeforces, CodeChef, and AdCoder held a regular contest, which definitely boost up your confidence. And जो Codeforces और CodeChef की जो रेटिंग है जो तुम कॉन्टेस्ट देके कमाओगे वो तुम अपने सीवी में भी डाल सकते हो. और ऊपर से अगर तुम लाइक Codeforces, CodeChef या AdCoder पे रेगुलरली कॉन्टेस्ट देते हो तो उसका ये फायदा होगा कि जब तुम अपने इंटरव्यू में बैठने जाओगे तो तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस रहेगा, क्योंकि अगर मैं वहां पे टाइम कंस्ट्रेंट पे क्वेश्चन कर सकता हूँ तो मैं यहाँ पे भी टाइम कंस्ट्रेंट में क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊंगा. तो वो फायदा रहता है. अब सिमिलरली जैसे CodeChef है तो CodeChef पे 2 टाइप के चैलेंज होते हैं, लॉन्ग चैलेंज और शॉर्ट चैलेंज. तो जो लॉन्ग चैलेंज है वो मोर इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए, क्योंकि उसमें तुम्हारे पास टाइम का इतना बड़ा कंस्ट्रेंट नहीं रहेगा और अच्छा खासे टाइम में तुम बहुत सारी चीजें क्योंकि फिर सीख सकते हो. क्योंकि अगर तुम्हें लाइक कोई टॉपिक मिलता है और तुम अगर उसे वो नहीं आता है तुम्हें, तो तुम्हारे पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम होगा कि तुम उस टाइम स्पेन में वो चीज सीख सको और उसको फिर इम्प्लीमेंट कर सको. तो उसके लिए आई विल डेफिनेटली रिकमेंड लॉन्ग चैलेंजेस ऑन CodeChef. एंड AdCoder थोड़ी अंडररेटेड है लेकिन तब भी लाइक बिगिनर्स में, लेकिन तब भी बहुत ज्यादा अच्छी वेबसाइट है बिगिनर्स के लिए भी. नेक्स्ट स्लाइड. तो गोल क्या है सीसी विंग का? हम लोग मोटा पैसा कमाने के अलावा सीसी विंग में क्या करना चाहते हैं? सो एक इंटरनेशनल कोडिंग कंपटीशन होता है, इसका नाम ACM ICPC है. तो इसको ACM ऑर्गेनाइज कराता है. ये दुनिया का सबसे प्रेस्टिजियस कोडिंग कॉन्टेस्ट माना जाता है. बेसिकली कोडिंग का ओलंपिक्स है और ओलंपिक्स की तरह इसमें इंडिया का अच्छा रिजल्ट आता नहीं है. सो लास्ट जब ये कंक्लूड हुआ था 2019 में, तब इंडिया की रैंक 41 आई थी. तो आज तक इंडिया में कभी भी ACM ICPC में कोई भी मेडल नहीं जीता है. CodeChef वाले अगर तुम इंडिया की ओवरऑल रैंकिंग इंप्रूव करोगे तो CodeChef वाले तुमको एक इनाम भी देते हैं, बहुत अच्छा इनाम देते हैं. तो हमारे सीसी विंग में यही गोल है कि मतलब
कोड शेफ सीसी में हमारा यही गोल है कि तुम लोग मतलब ACM ICPC में अच्छा कर लो, तुम लोग हम लोग गाइड करें कि तुम लोग ACM ICPC में कुछ उखाड़ लो, और बस। हेलो। हाँ, तो हमारे बिगेस्ट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है हर्ष सूर्य नारायण सर, who was an alumnus of IIIT Allahabad. He is mostly known through his coding username, which is Humble Fool. He was an acclaimed name in the coding community and he performed really good in many contests. He was a world finalist in the ACM ICPC 2005, and he was also one of the very first red coders on top coder from India. He graduated in 2006, but unlike other engineers, he didn't go for a MNC job. Rather, he wanted his college people to get great ranks in ACM ICPC and break the dominance of IITs in programming contests. Unfortunately, in 2014, he was hit by a speeding car, which resulted in his sad demise. So now, in order to preserve his legacy, Top Coder and IIIT Allahabad conduct Humble Fool Cup every year in Aparoksh. That was all from my side. Next slide, please. हाँ, सो अब गुडीज कमाने का टाइम हो गया, बहुत सारी गुडीज हैं, तो अब आंसर इजी क्वेश्चन है। और नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो तुमने अभी तक ITP टाइप तो स्टार्ट हो गया होगा, तो तुम्हें पता होगा ये, गैस करो किसके लोगो है ये, चैट में लिखना। और एक साथ लिखो यार, स्पैम मारो तगड़ा, कि तो कर रखोगा ना लोग। का फर्स्ट सेकंड पहले आया, उसके बाद आ रहा है, और नया तो हम नेम नोट कर रहे हैं, ठीक है, आपको प्राइस का पता चल जाएगा। राइट, और भी क्वेश्चंस है, वो भी कर लो फंडास पहले। हाँ, इससे पहले एक और है मेरे ख्याल से स्लाइड। स्लाइड्स नहीं है, हाँ इसी में कर लो। अच्छा, बैक बैक बैक। ये हो गया, राघव सर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। अच्छा, तो कोड शेफ में ACM ICPC में अगर इंडिया की रैंक इम्प्रूव करो ओवरऑल, तो कोड शेफ वाले कितने का नाम देंगे? इसके तुम सीसी करके कितना पैसा कमा सकते हो? $15 लाख क्लोज है, थोड़ा और पास लाओ। हाँ, 16.5 लाख लगभग सही है। अगर इंडिया की तुम 18 से अंडर रैंक लिया ACM ICPC में, तो कोड शेफ वाले 16.5 लाख देंगे। टूरिस्ट का पूरा नाम क्या है? अगर किसी ने सीसी स्टार्ट करी है, उसका तो नाम सुन ही लिया होगा, टूरिस्ट। उसका पूरा नाम क्या है? उसका हैंडल सुना होगा, टूरिस्ट। यार इतनी देर में तो ऑनलाइन सर्च मार लेते हैं। अच्छा, कोई भी 5 CC साइट्स का नाम लिखो। एक ही विंग, एक साथ लिखो 5। ठीक। अच्छा, अब ये थोड़ा जनरल क्वेश्चन है। किसी नंबर को प्राइम है या नहीं चेक करने के लिए सबसे एफिशिएंट लॉजिक क्या सोच सकते हो? एक लाइन में बस और लॉजिक एक्सप्लेन कर दो।
नंबर प्राइम है या नहीं चेक करने के लिए। हाँ रूट एन तक ठीक, इस एक ही नंबर सीख रहा हूँ। नेक्स्ट। हाँ तो ये था हमारे साइड से। तो देखो मतलब बात ऐसी है कि तुम्हें सीसी करनी है अभी से लेकर के जब तक तुम्हारा प्लेसमेंट नहीं होता, जब तक तुम प्लेस नहीं हो जाते, तुम्हें सीसी कभी ना कभी मतलब अपने कॉलेज लाइफ में करनी ही करनी है। सारे विंग मेंबर भी करते हैं और उनके कोऑर्डिनेटर्स ने भी किया था और करेंगे। ठीक, तो बेटर ये होगा जितना जल्दी स्टार्ट करो। अगर इनिशियल डेज में स्टार्ट करते हो तो वो बहुत ही अच्छा है। और अगर अभी स्टार्ट करते हो तो वो तुम्हें सब जगह हेल्प करेगा। फ्रॉम सीपी का सीपी जो है सीपी के डोमेन में हेल्प करेगा ही करेगा। इसके अलावा तुम्हारे सब्जेक्ट जो होंगे आईटीपी, डीएस, डीए, इवन एआई, उनमें भी हेल्प करेगा। और उसके बाद जो अल्टीमेट चीज़ है कि ज्वाइन किया ट्रिपल आईटी है, कोडिंग कल्चर और प्लेसमेंट्स देख के ना, तो जो प्लेसमेंट्स है, कोडिंग इंटरव्यूज है, उसमें हेल्प करेगा। बड़ी बड़ी कंपनी फोरने में हेल्प करेगा। आई थिंक इतना मोटिवेशन तो इनफ है ना। प्लेसमेंट ही होगा ना अभी तक जो आए होगे कॉलेज, ये जो चूज किया होगा, ऐसे इसका टैग भी नहीं होता है। सही है। हाँ सीसी तो इम्पोर्टेंट है ही भाई बहुत। तो आई थिंक दिस इज ऑल फ्रॉम आवर साइड एंड जल्दी हम लोग सेशन लेंगे वेर विल टेक डीप इनटू सीसी, हाउ टू गेट स्टार्टेड, हाउ टू यूज डिफरेंट साइट्स एंड ऑल अदर स्टफ्स। टिल देन स्टे ट्यून्ड, सी यू। Hello, am I audible? Sure. Okay. Hey everyone, I'm Srujana. I'm a member of Cybersecurity Wing, and I'll be introducing and all the stuff. And when we remember the word cybersecurity, we all must have thought of those hacker movies and yes, hacking. So we all see these hacker scenes where they hack NASA and everything. So and we all get these feelings, adrenaline rush and everything. When we see those movies, we'll be thinking, oh, I also want to hack a Facebook account, an Instagram. So but even though they are not really possible, but we can do many other stuff like web hacking and everything. Be it a website or an app or some software or a program, everything has bugs in it. Any device connected to internet is really vulnerable, so everything can be hacked if we have the really skills, if we really have skills. And we are the cybersecurity wing of Geek Heaven and Hackers of AAA. So our main goal is to bring together the cybersecurity talent and share knowledge. And if possible, we can also make exploits to some softwares and stuff. And basically what we do is we have different sectors even in the cybersecurity wing, like web hacking, reverse engineering and stuff, and we categorize things, and we participate in CTFs or bug bounties and everything. And a fun fact is that Mithul, member of cybersecurity wing, has exploited a viral, which you must be familiar. You must have registered courses in it, and he informed the technical staff. So if you do find a vulnerability, you can inform them. So and then I'll introduce our wing. Next slide, please. Our coordinator, Krishna sir, is a researcher. He recently did a research internship in Netherlands, and he's traveling. So right now he couldn't come here. And he's also a cybersecurity enthusiast. So if you do have any doubts or related to this, you can always contact sir or us. Next slide. And me and Mithul are the members of cybersecurity wing. As I said, Mithul really he tried those, and I have the interest
on all technologies and everything. I'm basically interested more into web hacking, like website exploitations and everything. And that is it from Irving. If you do like those hacker scenes and everything, the feel and everything is really similar to what we do. We participate in CTFs as a team, and we also did a project for open code, a cybersecurity project. You can check it out when you're free. And that is it. And thank you. Let us all meet during the workshop. Hello, am I audible? Hello. Yes, you are audible. Okay, thank you. Hello everyone, I am Pratyak Singh, member of AI. I know you all must have heard about AI before joining this college. Come on, AI and ML, it's super hype. But trust me when I say this to you, that hype of AI and ML, it's justified. Means, come on, you can't even hype it enough. How can you undermine it? Ranging from the filter on Snaps to the next movie you'll watch on Netflix, from next day's weather to connecting people with Google Translate. AI is everywhere. Now, let's just take a simple example, okay? See, the thing is simple. Human and objects, they tend to follow patterns, and AI feeds on these patterns. It exploits them, and well, you can do anything you want from it afterwards. Let's just take a simple example. You all chose colleges, na? You had many options. You all chose triple ITA as the college you wanted to partake. Now, what were the factors? What were the factors for choosing these colleges? Let's make this a bit interactive. Na? Can you give some factors in the chats for me? What are the factors for choosing triple ITA? Come on, placements. Okay, I got one for placement. Coding culture. Okay, coding culture, location. Location, okay. Campus life. No one here for campus life? No, achha, no one is here for campus life. Okay. Sex ratio. Anyone? Oh, okay. No one for sex ratio. All right, all right. Let's just take two simple ones now. For example, let's just take one is placement, and the second one is your, come on now. Let's take one more. Distance from your home. First one is placement, and the second one is distance from your home. Now, if you only had these two factors, what would have been distribution among these for a correct decision? Like what's the margin? For example, I should take 60% for placement or 40% for campus life, 80% for placement, 40% for campus life, 99:1. I got one. But how do you know that you make a right decision using this factor? It's simple. Come on. Okay. Okay. 80-20. See, different people have different preferences. But how do you know that you will make a right decision if you take this margin between them? So see, this is a simple use case of ML. Which decision is correct based on the filter, based on the margins between them. So see, as I told you, AI is everywhere. Okay, now coming back to what do we do in this artificial intelligence way? You are making some website, you are making some app, or you just have a problem that can be solved using artificial intelligence. You can contact us. We will be happy to help. You just want to learn about the subject, how artificial intelligence works. We will be happy to help. You are facing some error. Come on, the free services members are always available for you. And one of the important thing I like more about AI is that it's very supportive. The community of AI is very supportive. You don't understand anything, you can just Google it and you will find a solution somewhere. You don't know how to implement some part of code, there is someone who has already implemented it and is happy to share it with you. You don't have enough computation power to train your model, there is someone who has already trained it with his own money and is ready to share the weights with you. Weights are like basically these margins that I was talking about. Let's leave this here right now. So someone who has used his money is happy to share his weights with you. Just understand this, like someone is using their own money to learn about something and they are ready to share it. So this is really cool. Now coming back to why should you learn AI? Why should you learn AI and ML? First reason, it's super cool. It's like carrying that Erodo physics book in your backpack. You never solve it, but your friends respect you for just carrying that.
memories. And after that, next thing, let's talking about the next region. Next region, why you should learn AI and ML. Come on, you're not living in 19th century, are you? 20 and 21st century is not defined without AI and ML. So if you are living in 21st century, you should certainly learn it. But enough with the jokes. Let's talk about a few valid reasons why you should learn AI. Okay, the first one being you all must have learned somewhere that computer doesn't have brain. In your lower classes, computer doesn't have brain. I know I've read it in some book. Computer doesn't have not that CPU. It's like you give instruction to computer and then it follows it. It doesn't have a brain. It's of its own. That's what I'm talking about. Jarvis is not real, mate. Just class 3. So yeah, if you still think that computer doesn't have brain, we can talk on a meet. See, AI and ML, it is basically that. It helps you to see the patterns that even human eyes can't. That's where AI and ML comes useful. It just helps you to realize the true potential of your machine. Now, last reason for learning AI and ML, it's pretty fun sometimes trying to predict the future. So that's it from me. Now I would like to introduce the member of our wing. Can we go to the next slide? Hello guys, my name is Divyansh Rai. I am an IT third year student and I prefer calling myself a ML engineer. Basically, I help firms and professors inside and outside the college in solving real life problem. So that's what makes me an ML engineer. And that's all. Well, let's move on to the members. I think Himanshu is not here. He's one of our member. Are you here, Himanshu? Let me introduce him. He's a bit interested in machine learning and deep learning, and that's all. We can move on to next. Hello guys, my name is Utkarsh. Basically, I do deep learning and reinforcement learning stuffs. I used to do projects on deep learning, and currently we are working on a plague remover project. Later on, you will get to know what is the use of it. It's basically a paraphrasing tool. Currently, we are doing research on it, and later on, we will try to implement. So, thank you. That's from my side. Hey guys, myself Parth Soni. I basically love doing deep learning, and I mainly prefer working on text data. And as Utkarsh said, we are working on a paraphraser, which involves working with the text data. That's basically what I need. Natural language processing. Okay, I have already introduced myself. I'm Pratyaksh. I also do web development. I do machine learning. Basically, I do machine learning a lot because I love it, and I also develop desktop applications. And as all other members have already told, we are currently working on flag remover, but slowly you will get some more edtech related edtech based AI applications in the future, which you will use. Means it will be useful to you. Now, okay, one more thing I would like to just tell before ending this for AI session. That is that most of you were worried that if we will start everything from scratch or not. So yes, we are planning to start everything from scratch in our workshop. We will first teach you about Python, and then we will guide you through the different aspects of machine learning. And also, some of you are worried about the hectic schedules that have been given to you. But I just want to tell you that I was sitting on your chair previous year, and I did it. I learned AI. I learned a lot of things. Not only AI, I also do web development and desktop development. I learned all of this, and I think you can do it too. So you should certainly join all the workshops of the technical societies, and that will be all. Thank you. Yeah, Shaurya. Yeah, hi guys. So, I hope that you all know now what the purpose of Geek Heaven is and what all things the different wings of Geek Heaven do. So,
soon we'll be starting with something known as the Aproksha month. I guess we can move on to the next slide. Yeah, so the Aproksha month or the APK month is basically a month and a half long workshop sessions that we conduct to guide all the freshers with and make them familiarize with the new technologies that they all would be facing. So yes, so we'll be conducting, each wing would be conducting a workshop, and each workshop would continue for about a week or 10 days. And during the entire duration of the Aproksha month, we'll be having mini tasks throughout the month, so that you guys can even test whether what all things that you have learned have actually stayed with you guys or not. We probably are even sharing the schedule of the Aproksha month. Can we move to the next slide? Yeah, so this is basically a brief about what Aproksha month is. So it is conducted by Geek Heaven and in association with Aproksha. So Aproksha, as you all know, you guys had attended the APK orientation yesterday. So you all are familiar, or you all are already familiar with what APK is and how it's promoting the tech culture in the college. And Geek Heaven is supports us by conducting workshops so that all the freshers already know about the different technologies, and only then they would be able to participate in all the competitions and the contests conducted during the fest itself. So yeah, can we move to the next slide? Yeah, so there are no prerequisites per se for Aproksha month. All we really need from you guys is the enthusiasm to learn, and all we really hope for is a huge participation from you guys, because this is going to be the beginning of your technical journey in Triple IT Allahabad. Next slide. Yeah, so we'll be beginning with FOSS. This would start from the 10th of January. This is probably the next Monday. And then we'll move on to web development, app development, design wing, and then we'll move to artificial intelligence, cyber security, blockchain, and competitive coding. So blockchain is blockchain has been introduced for the very first time this year because of the recent surge in interests in this particular field. And then competitive coding would go on. Competitive coding would not just be restricted to 3rd to 9th of March, because this is a very, very important wing. It would continue for a much longer period of time, either under APK month or under Code Plus. And yeah, so all we really hope from you guys is turning up for the workshops, because this would only help you guys to, begin your journeys in various different technologies and have a chance to participate in the contests conducted during the fest, so that you guys can win prizes and stuff. क्या prizes दे रहे हो Is भाई? there something else that we need to share? क्या prizes दे रहे हो? Prizes तो यार बहुत मिलता है ब्रो, उसकी तो कोई टेंशन ही नहीं। हाँ तो yeah, so this is a brief about how APK month would be conducted. A leaderboard board will be maintained. So this leaderboard will be updated based on the tasks that have been assigned to you guys and how well you perform them. So the only way of getting on top of the leaderboard is by actively participating in all the different workshops that are being conducted by all the wings. I guess last year's winners were Mithul and Aditya, if I'm not wrong, of APK month. They are now a Yep, part of yep. Geek Heaven as well.
So yeah, that this like performing well in APK month, gives you the opportunity of getting in the notice of seniors, and hence it would also help you to get an opportunity to be a part of Geek Heaven as well. So take this seriously, and yeah, I guess at the end of APK month, the top participants will be awarded with swags and many other prizes. That is, of course, there. And not just APK month, once you have gone through the entire series of workshops, you will be able to participate properly in the events of Aproksha, which would be conducted much later, so that even if you have many other things to learn, you can do that as well. Next slide. Yeah. So If you we have any have dropped the yeah, like if you have any queries, you can post that in Discord server. अभी भी किसी को तो बोल लो, जैसे 5 मिनट है अपने पास. डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक हाँ. वापस से डाल दो. हाँ, मेंबर और को. तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो सारे विंग्स में एपीके मंथ के. एंड स्लाइड शेयर कर देंगे हम. ये चीज की कंफ्यूजन एक थी कल के सेशन में, आई गेस अप्रोक्षा के जब ओरिएंटेशन चल रहा था, कि यू गाइस वर नॉट श्योर कि कॉम्पिटिशन्स कब होंगे और पढ़ाया कब जाएगा. तो जो पढ़ाने वाला पार्ट है वो होएगा एपीके मंथ में, बट तुम लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए टास्क्स भी रखे जाएंगे, जिसका लीडर बोर्ड मेंटेन होगा. इसके अलावा कॉम्पिटिशन्स प्रॉपरली होंगे अप्रोक्षा में, और उस ड्यूरेशन में तुम लोग अपने जितना भी तुमने पढ़ा है और जितना भी नॉलेज गेन किया उसको टेस्ट कर सकते हो. सो एंड एक ये अभी टेस्ला और ग्रेविटी का भी होगा ओरिएंटेशन, तो लीव मत करना. बस कीक हेवन का एंड ही कर रहे हैं हम. या वी विल सेंड द रिकॉर्डिंग. एक बार गीक हेवन ओपी भी लिख दो यार चैट पे. Yeah. And if you have any doubts, you can reach out to us on our email, geekheaven@iita.ac.in. Like, awesome. Yeah. Chandra.